तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वर्ड द कोड के एक नए एपिसोड में। आज हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 761 डिवीजन 2 के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉरबिडन सीक्वेंस। तो क्वेश्चन है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं एफ एंड टी, लोअर केस लेटर्स की, और हमें दिया है कि टी इज़ परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग ए बी एंड सी, मतलब यानी कि टी के कंटेंट्स एक्स के ए बी सी ही हैं। बस हमें एक स्ट्रिंग एफ डैश ढूंढनी है जो कि एफ की एक परम्यूटेशन हो और वो और उसमें टी अकर ना हो। सो क्या है, and string t is not a subsequence. Okay, if string a is a position string b, if the numbers of occurrence of each distinct character is same. Okay, string a is lexicographically smaller than string b. ठीक है, तो हमारे पास 100 की है लेंथ ए बी सी। ओके, तो हमारा ए बी सी अगर नहीं होना चाहिए, ए सी बी, यानी कि हम ए बी सी 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 ये ले सकते हैं। ओके, हाँ, तो इसका हम सीधा लॉजिक ये यूज़ कर सकते हैं कि हम जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है, जो टी स्ट्रिंग हमें दे रखी है, हम इसको हम ऐसे हम थोड़ा सा रिपरम्यूट करके इसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉल करेंगे। इसमें का लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ग्रुप जिसमें जो ओरिजिनल के इक्वल ना हो, हम वो फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी स्ट्रिंग एफ के कंटेंट्स हैं उन्हें हम सॉर्ट करेंगे और हमें उन्हें स्ट्रिंग टी में जो कैरेक्टर्स का ऑर्डर है उसी ऑर्डर में हम उन्हें प्रिंट कर देंगे। सो लेट्स वर्क ऑन दिस। एक चीज़ रह गई, हैशटैग pragma gcc optimize o fast unroll loops hashtag और क्या है। अब अगला हम इनपुट के लिए iOS बेस cin.tie cout.tie and this now void solve। तो हमारे इसमें पहले क्या है, string s t। now we will take vector int data 26 और शेड्यूल से मैप char int s underscore data map of character comma integers t underscore data। now c in s t for
कैरेक्टर सी इज टू एस अंडरस्कोर डेटा सी प्लस प्लस एंड फॉर सी इज टू टी अंडरस्कोर डेटा सी प्लस प्लस। नाउ हमारा काम क्या है, हमें टी को लेक्सियोग्राफिकली स्मॉल करना है और ये भी मेक श्योर करना है कि वो ओल्ड के इक्वल ना हो। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टी एम पी इक्वल्स टू नल फॉर कैरेक्टर फॉर ऑटो टी टी इज टू टी अंडरस्कोर डेटा टी एम पी प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे टी टी डॉट सेकेंड कॉमा टी टी डॉट फर्स्ट। तो ये हमारा एक बना देगा। अब हम चेक करेंगे वाइल टी एम पी इफ टी एम पी इज इक्वल्स टू टी एम पी इक्वल्स टू नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ टी एम पी। ये नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन हम बनाते हैं। इसका हमारा काम क्या है कि ये अभी आपको बताऊंगा। हमारी अभी करंटली जो स्ट्रिंग है वो पूरी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम ये काम करेंगे इसके लिए कि इसे करने के लिए अगर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो हम वो एक्सेस करें पिछले वाली। तो हम ये करेंगे कि पहला पेयर जहाँ पे मैं चलो कर ही दूंगा स्ट्रिंग next नेक्स्ट परम्यूटेशन स्ट्रिंग %str, इसमें यहाँ पे ये हटाई देते हैं, ये हम void फंक्शन बनाते हैं। तो अब क्या करते हैं, इधर सेट मल्टी सेट ऑफ कैरेक्टर्स tmp while हमारा पिछला कैरेक्टर छोटा होना चाहिए, while int n equals to str dot length if str dot length equals 1 return और अगर उसमें पिछला कोई कैरेक्टर उससे छोटा नहीं है, यानी कि पूरी तरह इंक्रीजिंग नहीं, पिछला कोई कैरेक्टर उससे बड़ा नहीं है, या अगर बड़ा कैरेक्टर है तो एक्सचेंज करने पे परम्यूटेशन पिछली जाएगी। अगर कोई छोटा पिछला कैरेक्टर अगर हमारा कोई करंट कैरेक्टर से छोटा नहीं मिलता, यानी कि वो और सीक्वेंस पूरी तरह डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, तो हम रिटर्न तो यानी कि हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी। फॉर int I equals to n minus 1, I greater than equal to 0, I minus minus if यानी कि वो सब पिछले थे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम जो ये कैरेक्टर हमें मिला है जो उससे प्लस छोटा है हमारे करंट कैरेक्टर से, हमें इसे एंड पर हमें इस प्लेस पर अगली स्ट्रिंग का सबसे बड़ा कैरेक्टर नहीं, अगली बाकी पार्ट का सबसे बड़ा कैरेक्टर नहीं, बाकी कैरेक्टर्स इससे लेट्स से 3 2 1 नो 3 1 2, सो नेक्स्ट विल बी 3 2, तो 2 के लिए 1 से उठा है तो 2 इधर 1 2 3 4 के करते हैं, तो 1 2 3 4 4 से छोटा 3, तो 4 और 3 एक्सचेंज 1 2 4 3, तो 3 है, 3 से छोटा क्या है,
नो नो नो, यहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे एक बार मैं सर्च ही कर लेता हूँ। सोचने दीजिए। एक हमें मिन स्मॉलेस्ट कैरेक्टर भी रखना पड़ेगा अभी तक का। int n equals to str dot length if n is less than 2, return now. Int p equals to n minus 1 for int I equals to p I minus 1 I greater than equal to 0 I minus minus। अब इसके बाद हमारा फंडा क्या चलेगा? if तो 1 2 3 4 1 2 4 3 के बाद अगला क्या आएगा? 1 3 2 4। ओके, तो इधर लास्ट कैरेक्टर एक्चुअली सबसे छोटा है। ठीक है। हाँ, if str I is less than str p, then we got the answer, otherwise return। Okay, so we will swap str I comma str p. Now we will sort str dot begin plus I str dot begin plus p and return. Let me check if this is the correct approach. We will not call solve and these here. See string tmp equals to 1423, so it should be the function should result 1432. See next permutation tmp cout tmp end line. One three four two. Okay, so there is an error as you can see here. 1342, it has went to a previous permutation. So 3 is less than 2, I is p minus 1. If stri is less than swap. Okay, I made an error. I 1432, yes, it is working. So now we can go into the solving part. Cout tmp end line. Now we will enter 1 a b a c a b a b c. So it is printing ACV, that's the order we should print in. Okay.
just do the things. This is just for we are given that string t is only string t only contains abc, so yes, it is easy for us. Now we will go for a vector int data 26 comma 0. Oh, I should have made this earlier. C minus a. Now what we have to do, we have to check in which order. So we have 6 possibilities: A, B, C, A, C, B. So we will check that. For int I equals to 0. No. And string answer equals to blank. Okay, there is also a part where it's just ACB, ABC, 3 character string, mod of t is equals to 3. So yes, no worries. Answer plus equals to string what is the name, str no tmp 0 comma s underscore data tmp underscore tmp 0 minus a. We should do this 3 times. 1 2 2 1. Okay, now we have to do for int I equals to 3, I less than 26, I plus plus, answer plus equals to string of a plus I comma s underscore data I, and we will print C out a answer end line. Now let's run this. Save. Okay, why is it behaving like this? Control C out. There it shouldn't. Why is it behaving like this? Okay. And this we also have to make sure that if one of the characters of ABC is not, if one of ABC is not occurring in the
not occurring in S, we won't need to worry about the permutation. We can just minimize it lexicographically. But why is it behaving like this? TMP is this, okay. Why is it not printing anything? A plus I equals to 3, so it will be D. So D to Z. Okay, but okay. TMP0, let's say it is A, so if data 0, B, okay, I made a mistake here, comma, A plus I. Okay, what is happening here? A, B, C, D, I, S, B, C, this part is not done. D, I, S, B, C is left. Okay, it is leaving ABC aside. Why is this happening? Okay, I made that, comma TMP 0. One, two, one, no one. So as you can see here, this should work. So let's check for an answer. ACCBB. Okay, I forgot the last check. So here after this, if s underscore data 0 and s underscore data 1 and s underscore data, and there is also comma 0 2. If all these three values are present, then only we will proceed further. If any of them is 0, the only task we have to remain is lexicographically sort S. So after this, here if not of s underscore data 0 or not of s underscore data 1 or not of s underscore data 2, then we will only do this sort s dot begin and c out s and line and return. If all three are present, then only the permutations matter. So let's see. We have A C B B, A B triple C, B C D I S, A C B B D R R, D B B C A C. Let's try submitting this.
This should work, I think. Okay, so pre-tests are passed. Let's move on. GCD, the problem B, GCD problem 1617b.cpp. Okay, yes, the name is correct. Hashtag pragma gcc optimize go fast and unroll loops. Hashtag pragma gcc target. Okay, now next step is using namestd into main return 0 fast IO int so t cnt while t minus minus solve. Void solve. So let's read the question. So given a positive integer n, find three distinct integers in a way that a b c, that a plus b plus c is equals to n and gcd of a b is equals to c. So okay, so we have to find a way that c into 1 plus a in alpha into beta is equals to n and alpha and beta are co-prime. This is the task we have to do. So we will be given int n, c in n. So we are given with 18. So 18 has factors 2, 3, 6 and 9. Okay, so 9 and then 9 plus 9 plus 0, no, it won't work. 9 9 0, let's see, 9 0 no 0 9 9 because c is 9, so 0 and 9 have a GCD of 9. Okay, this should work actually, but let's see. So for 2 into 9 equals to 1 plus 8. So 8 can 8 be divided into two co-prime numbers? Yes, 3 and 5. So we'll get 10, 6 and 2. That is also an acceptable answer. So 63 has yes, it can be done quite easily. So if a number is even, if a number is odd, we will divide. So let's find the smallest factor of the number n. If the number n is prime, let's say 73, then the only choices we have are 1 and 2 distinct numbers. And if it is not prime, find the smallest factor, divide it by that, and then minus 1. And if it is if the resultant is odd, then break it into two consecutive numbers because they are always co-prime. And if it is an even number, then two odd numbers which are two consecutive odd numbers because they will also be co-prime. 3 7. So that's the solution we will be going with. So here our time complexity will be O of root n, where n is the given instruction. So n has a range of 10 to the power 9. So for each query we are taking, okay, this can for 10 2
5, 1, 3 and 1. Okay, so 2, 2, 6. Let's exist 9. 3 is the smallest factor. So, and 1, 4, 1. If no, we should take the 1. We have to relate an O of 1. If there is answer, we can which we can go for O of 1. C equals to 1 int C n minus minus int if n and 1, if n is odd, int a comma b, declared them. If n is odd, a equals to n by 2 and b equals to n minus a. Here if it should be and else a equals to n by 2 minus 1, b equals to n minus a. This line is redundant, n minus a, so we will take it out of the blocks. We can save this, do this here. So yes, now see out a, b, c and line. Let's see if this works. Control Alt N, we will run. Okay, so 8, 9, 1. Oh yes, so well this part is working. And if it is even, we need 2 consecutive odd numbers, but let's say there are not 43, 47. If it is odd, then it works, but if it is even, let's find 2 numbers. If it is 2, no, else a equal 1. Done. 891, 161, 171, 189, 1. This is the ultimate solution. You can't optimize it any further. Let's try submitting this. This should work because factually it is correct. A plus b plus c is equals to n, and GCD of a and b is equals to c. And okay, we also have to find distinct. Okay. A cannot be 1. So let's revise a bit. Let's step back. If system is even, we have to find 2 numbers who are co-prime and their sum is even. Well, it is going in the direction of Gold-Bash conjecture. And that for all prime, let's say if it is 11 has a factor of 1, so 5, no, 3 and 7. Okay, well, okay, if it is divisible by 2, not 4, then there are 2 consecutive numbers. If it is divisible by 4, no. A equals to n by 2 minus 1. So why was it giving n? Okay, a was n was an odd number into 2. So if it is a multiple of 4, it goes here. If it is a multiple of only 2, then this will produce 2
odd number, two even numbers, 2 into an odd number, let's say it is 6. N is 6, so it will produce 2 and 4. So we need 1 and 5 actually. So else, so we will open block if n modulo 4 is equals to 0, then a equals to n by 2 minus 1. Here we all know that n is an even number, so yes, if it is divisible by 4, it should be divisible by 8 too. So let's 8 can be 3 and 5, yes. If n modulo 4 is equals to 0 and a equals to n by 2 minus 1, else a equals to so it is, let's say 6, 1 and 5, n by 2 minus 2, n by 2 minus 2. But we have to verify that this does not produce an error. So let's say 10 has 5 minus 2 3, 5 plus 2 7. Okay, there is a difference of 4, and it will always produce odd numbers. Okay, n by 2 is odd, and both of these are odd numbers with a difference of 4. I guess it should work. 43, yes, it's working. Now let's try. This is a smart trick on our part because we turned C into 1. Okay, pre-test passed, our trick worked. Let's not do this one. Christmas chocolates, let's do E part. The second example of Christmas is coming. Icy has just received a box of chocolates from her grandparents. We will not be doing the problem D as I am not a fan of interactive problems. I have always faced troubles with them. So here we are. उसके डब्बे में n chocolates हैं. Ice chocolate has a non-negative integer type AI. ठीक है. IC believes that good things comes in pairs. Unfortunately, all types of chocolates are distinct. ठीक है जी. IC wants to make at least one pair of chocolates the same. As a result, she asks her grandparents to perform some chocolate exchanges. Before performing any chocolate exchanges, IC chooses two chocolates X and Y. ठीक है. In chocolate exchange, IC's grandparents choose a non-negative integer k such that ठीक है जी. Okay, and change the chocolate. ठीक है. Type to this. The chocolate exchange will be stopped only when AY equals to AX. So these are distinct. So let's say there are. Okay, let's watch. Okay, this can be done easily by checking if any pair has a sum which is exactly a power of 2. Let's say 5 and 9. No. 2, 5, 5. What we have to output? I would 3 X and Y. 2, 6 and 9. Okay. And what is M? Number of exchanges. So we are converting 6 and 9 into each other. So let's say 6 can be converted. How will we convert 6 to 9? So 6 can be converted to 2, 10, 2, 10, then what for 2, 10, 28.
Okay, and 9 can be converted to what numbers are they choosing exactly? 8, then we will get 2. Let's. Oh, oh man. If it is an even number, first convert it to 0. Then to. This is. This is a hit. This is. Oh, this is horror. Okay, but it is acceptable. 4 can be converted to 8. How? 0 and 8. If they are distinct powers of 2. Yes, that's the only way. But let's. That's the only way. If they are distinct power of 2s. Code 1617 e.cpp. No, cp 1617b 1617e. Erase to solve. So yeah. So this power returns whether a number is an exponent of 2 or not. Now let's get solving. And what is the size of it is 10 to power 5. 5 and 7. So 5 to 7. So 5 can be converted to 3. 3 can be converted to 1. Okay, don't care about anything, convert any to any. And AI is 10 to power 9. The range of 10 to power 9. So if both are even, no problem. Both are odd, no problem. If one is even, one is odd, then get to 0 and get to that. Then M is the number of exchanges. Let's get solving. Int n, c in n, for int I equals to 0, int a comma b, c in a, b, I less than n, I plus plus, int x, we don't care about x. Now if a equals to 0 or b equals to 0, then we just have to convert the other number to 0. So what should we do? Let's say if it is we have to find the maximum value at which if a is 0,
then let's say 7 can be 9. We have to decrease it. 7 can only be decreased by that. 9 for 5, 5 and 3. Okay, it will always decrease from when subtracted from the exponent greater than equal to it. Okay, then while or b, then int answer equals to 1, while b not equals to 0. And yes, this will each time it will decrease, and let's not worry about that. It decreases fastly, it take a long in time. Reduce b and answer plus plus, C out 0, 1, answer. And return. Void reduce int ampersand n if is power of 2 n equals to 0. Return. Let's say we have 6, 6 will go to 2, 2 will go to 0. And let's see again, if it is an odd number, if it is not a power of 2, what we have to do is bit shift the number by bit shift it by left one time. No. For int I equals 0, I less than which is 9 into 30, so it is integer, so 31, no, 32, I plus plus. If is power of 2 n and 1 bit shifted by I, then n equals to 1 bit shifted by I plus 1 minus n. And then return. So if it is 6, then we will it will go at when I is 2, so 4, 6 and 4 is 4, 4 is the power of 2, so it will be 8. And we don't have to do this anymore. So let's see now, if a is not 0 but b is 0, if b equals to 0, int answer equals to 0, while a not equals to 0, reduce a answer plus plus, C out
0 1 space answer and done. But let's say if none of A and B are 0, but let's say both, if one is even and one is odd, A and 1 or B and 1, both have opposite, both one is even, one is odd, then int answer equals to 0 while A not equals to 0, answer plus plus and reduce A, while B not equals to 0, answer plus plus reduce B. But let's say if they have they are both of same nature, so let's say they are 4 and 8. Nah, okay, none of this is necessary. Zero, 1, Control Alt N, 5 6. Oops, we don't have to do this. Equal to 1. Okay, why is it stuck? CNN AB. Let me do something fine. Cout HERE. Entity solve and CNN A comma B. Okay, I equals to I less than n, I plus plus. What is the part it is stuck at?
this here. Vector int data to n of n comma 0 c. Okay. Where has it stuck? कहाँ अटक गया भाई ये? कहाँ अटक गया भैया? हियर आ गया 5. एक सेकेंड में इधर कंट्रोल सी मारूँ, मैं डीबग स्टेटमेंट ही लगाऊँ. सी आउट एन एंड लाइन यही बकचोदी करनी पड़ेगी. सी आउट डेटा आई एंड लाइन. फाइव 6 7 8 9. ओके, तो इसके यहाँ तक चल रहा है. कहीं रिडक्शन में तो गड़बड़ नहीं हो रही. लाइक फिर 9 का 7 ही बनेगा. सी आउट ये करके देखते हैं. ओके, सो -35 कहाँ से आ गया भैया ये? पता नहीं, चलो इसके लिए करते हैं. सी इन इंट जीजी सी इन जीजी ये करते हैं. -3 5 है. फाइव का -3 कैसे बना दिया इसने? एट -5 है. Here 0. Why 0? Okay, 1. If it is 5 then 0 पे चलेगा, यानी कि 1 हो जाएगा. यानी कि 2 माइनस गड़बड़ मिल गई. यहाँ पे रिडक्शन फंक्शन गड़बड़ चल रहा है. हमें चाहिए उसका लीडिंग बिट का इंडेक्स. हमें लीडिंग सेट बिट का इंडेक्स चाहिए. इंट b इक्वल्स टू 0 while 1
b is less than equal to n, b plus plus. Okay, if it is 0, if n equals 0, return no matter. And 1 to power 2 to power 0 is 1, so if it is 1, then it cannot. Okay, so 1 is handled here. So let's say it is 3, then 3 is less than 4, n equals to 1 b minus n. What? One? Why, man? Why? So 9, 8. Okay, it is working properly. 0, 1 and 5 in exchanges. It is an acceptable answer, but fast I. Let's try submitting it. This one is a bit of a nightmare. Let's hope it works. Christmas chocolates. Problem E. चल रही भैया चल रही. Wrong answer. Why? Why would you say that, man? Okay. 1, 2. Indexing error. Oh, I didn't pay attention. It's an indexing error only. Let's correct. We have corrected it. Now let's see if it works. Well, wrong answer on pretest 6. Wow.
this can be done by the following things. Let's say we can reduce this by, let's say we can form a vector reduction redn, no, vector int redn chain reduction size 2. Okay, redn 0 dot clear redn 1 dot clear redn dot and 0 dot pushback a. Here redn 1 dot pushback b. So what we are doing here is while a dot back, okay, we can also do this. Okay, a and b are distinct. Redn 0 dot back equals to redn 1 dot back redn 0 dot pop back redn 1 dot pop back redn 0 dot size plus redn 1 dot size plus 1, because we don't have a common element. Let's hope for a bit better things, which don't look so good. Peter Parker, Mr. Stark, I'm not feeling good. Compilation error. Okay, not found. इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं भैया आज हम? पेनल्टी कितनी लग गई बुरी? कितनी है? 5वीं पेनल्टी भैया। ये क्या हुआ? मैक्सिमाइज करो। And yes, found the error. Distance is not equal to 6, it's 5. Plus 1 is the problem. We don't have to do that. भाई काम कर रही हो? प्री टेस्ट 18 फेल मत हो जाए मेरे भाई।
हमारी उम्मीदें टिकी हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा। रन टाइम एरर, वाह। अब मैं इंटी ओवरफ्लो, लॉन्ग लॉन्ग लो यार। वेक्टर ऑफ इंट नहीं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, इंट एन नहीं, लॉन्ग लॉन्ग, इंट नहीं, लॉन्ग लॉन्ग, 1 LL। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर भैया, रन टाइम एरर। प्री टेस्ट 19, ये इंटरनेट बड़ा फास्ट चल रहा है आज, है जी, मजे आ गए। रन टाइम एरर एग्जैक्टली भैया, रन टाइम एरर में है क्या? हम डिवीजन कुछ कर नहीं रहे। एक्चुअली ये पावर ऑफ 2 यहीं हैंडल हो जाएगी, 0 भी। ओके, ओ यहाँ रन टाइम एरर आ रहा है, समझ गए। रेड एन 0.empty नॉट लगाओ इधर, और रेड एन 1.empty, ये क्या हुआ भैया? कि ब्रैकेट्स, ठीक है जी। हाँ, रन टाइम एरर इसलिए रहेगा कि बैक एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी, अगर वो एलिमेंट ही 0 है। ओके, वो पहले ही 0 है तो एम्प्टी बनेगा। 1 है तो 1 बन जाएगा और वो रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक एम्प्टी हुआ तो भैया हम रोक देंगे। कोई भी एक एम्प्टी हुआ तो ट्रू होगा, यानी कि और दोनों ही एम्प्टी नहीं होने चाहिए, यानी कि दोनों ही फॉल्स। उम्मीदें बहुत हैं। पास्ट, यस, खुश हो जाते हैं अब। तो ई फाइनली हो गया। कितनी पेनल्टीज लगी हैं, स्टैंडिंग्स देखते हैं क्या सीन है। एक बार सी को भी दोबारा ट्राई कर लेंगे अभी। कोड 1617 सी, फ्रेंड स्टैंडिंग्स। हमारी रेटिंग भैया गिर रही है, -38। वाह भैया, सी का कुछ सोचो, अगर ये नहीं हुआ तो भैया हालत खराब हो जाएगी।
तो आज के एडिटोरियल के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पे बस 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। तो हम यहाँ पे डी इंटरेक्टिव प्रॉब्लम थी। वेल एक्चुअली मैंने इंटरेक्टिव प्रॉब्लम्स इतने सॉल्व नहीं करे, तो मैं उसमें आपका इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाया। और जहाँ रही बात इस प्रॉब्लम सी की, तो मैं कुछ देखूंगा कि उसमें जो भी इशू आ रहा था वो मैं आगे सॉल्व कर पाऊँ। सो लेट्स मीट इन अनदर एडिटोरियल ऑफ। तो अब हम किसी अगले एडिटोरियल या अगले किसी लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।